Ladies and gentlemen, please put your hands together once again for the wonderful performance by the young Air Warriors of Air Warrior Drill Team Subroto of Indian Air Force. Ladies and gentlemen, as the Air Warrior Drill Team marches out, you can see the Akash Ganga team marching in from your left. The team leader, Wing Commander Rahul Jha, will now introduce the team members to the Deputy Commandant. The team members are MWO Mahesh Machkanur, Warrant Officer Vishal Verma, JWO Sandeep Chaudhary, JWO Pavan Indora, JWO Naresh Babu, JWO Satish Jakhad, Sergeant Vikram, Sergeant Sandeep Tunwal. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. After a thrilling skydiving display by the Akash Ganga skydiving team and the daredevilry of the Air Warrior Drill Team, ladies and gentlemen, in a short while from now, today's parade, consisting of flight cadets who would be commissioned today, will be forming up in front of you. While we await the commencement of the graduation parade, we would take this opportunity to briefly acquaint you with the training pattern of the trainees who are going to be awarded the President's Commission today. A total of 121 flight cadets of 212 Flying Corps of Permanent Commission and Short Service Commission for men and women commenced ab initio flying training at the Faculty of Flying in December 2022. The faculty is also home to the pre-flight training course for the direct entry cadets of the flying branch selected through CDSE or AFCAT. After successful completion of the Stage 1 training phase, some of the cadets moved to Air Force Station Hakimpet for their Stage 2 training with the Fighter Training Wing, where they fly the Hindustan Jet Trainer 16 Kiran aircraft. The trainees have now been trifurcated into the fighter, transport and helicopter streams. After completion of their respective Stage 3 training, ladies and gentlemen, all officers will join the frontline operational squadrons of the Indian Air Force. It is also pertinent to mention that 53 cadets of 212 pilots course who had joined Air Force Academy after completing their training at the National Defense Academy have also received their B.Tech degree in Applied Electronics and Communication from Jawaharlal Nehru University. The next group of aviators being commissioned today are the trainees of 212 ab initio navigation course. Today, 5 trainees of the navigation branch would be commissioned. Their training was conducted at the Navigation Training School located at Air Force Station Begumpet.
Ladies and gentlemen, may we draw your kind attention to your right to witness the solemn movements of the Nishan and Casing drill, wherein the President's color of the Academy is being honored and prepared by the Nishan Toli to be paraded today. The President's color has its history engraved in the ancient Indian traditions. In ancient times, whenever any military unit marched, they carried a flag of their respective kings to demonstrate their king's supremacy. The flag was very significant, as if the army lost its flag to the hands of the enemy, it was a humiliation. And if the army captures the flag of the enemy, then it was a matter of pride, honor, and an occasion of victory. The tradition continued during the colonial rule. When the British Army moved across India, the regiments carried their version of the king or queen's flag. When India became a republic on 26 January 1950, all these versions of the king or queen's flags were laid to rest in the Indian Military Academy in Dehradun. These days, the award of President's Color is the highest honor that can be given to any military unit of the country. This is the ultimate acknowledgement of the unit's commendable service since its formation. Although today, the units have stopped carrying the color into battles, the tradition to receive, hold, and parade with the color during ceremonial parades is still prevalent in the armed forces. When they march by, they carry with them the living spirit of the military formation or unit. 10 September 1975 was a red letter day in the short annals of the Academy, where we are sitting today, which had the proud privilege of being the first non-combat unit of the Indian Air Force to receive colour from Shri Fakhruddin Ali Ahmed, the then President of India, at a parade commanded by Air Commodore Lakshman Madhavrao Katre, AVSM, who later became Chief of the Air Staff. The Nishan Toli comprises of 6 flight cadets who are specially selected for the occasion. Today, the Nishan Toli is being led by Flight Cadet Abhinav Gorsi. Ladies and gentlemen, the parade is about to commence, and in a short while, the sounding of the bugle will herald the beginning of the combined graduation parade. Ladies and gentlemen, keep moving ahead as the parade is now marching in, keeping in step to the famous tune of Northern Warrior. Look at their faces, filled with pride and eyes shining with determination. As they put their best foot forward, they march today on their way to becoming worthy officers of the Indian Air Force. Look at the marching contingents of the cadets in the blue Air Force uniform. Arms swinging, heels digging in, heads held high. Proud of the Indian Air Force heritage and motto, touch the sky with glory. Whether in the sky or on the ground, these air warriors would approach their task with confidence, dedication, and pride.
Number 8, Bharat! Number 2! Number 3! Number 4, Bharat! Number 8, number 3, Bharat! Number 2, number 4, Bharat! Now, the parade adjutant, Flight Cadet Siddhant Singh Thakur, will hand over the command of the parade to the parade commander, Flight Cadet Atul Prakash. The armed forces perform parade for ceremonial purposes as a show of discipline, to display the military might and to instill confidence in the country's military forces. Parade is a powerful aid to inculcate discipline and to develop a sense of military pride amongst the personnel of armed forces. The precision of parade is not only a sign of good discipline and camaraderie, but also a crucial element in raising the standards of military service. The ceremonial parade presented at the Air Force Academy marks the fulfillment of the initial objective of preparing the trainee for a career in the Indian Air Force. Ladies and gentlemen, may I draw your attention to your right as the Nishan Toli is about to march in before you. When the Nishan Toli passes in front of you, all are requested to rise and those in uniform are to salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरती है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वर्दी में हैं वे सलामी दें।
परेड हमारे समक्ष है। वायुसेना अकादमी के कमांडेंट, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशिक्षण कमान, वायुसेना अध्यक्ष और माननीय रक्षा मंत्री के आते ही परेड सभी का अभिवादन करेगी। Ladies and gentlemen, after having introduced the flying and navigation branch in the beginning, let me now introduce to you what duty each officer of the ground duty branches who are graduating today would perform in the Indian Air Force. The administration branch cadets are trifurcated into general administration, fighter controllers and air traffic controllers. Today, of the 50 trainees of the administration branch, 28 cadets would be commissioned into the Indian Air Force as air traffic controllers, 19 as fighter controllers and 2 into the general administration stream. The logistics branch cadets are trained in supply chain management, procurement processes, inventory control and spares management. 39 cadets of the logistics branch would be commissioned today. The accounts branch is responsible for the pay and allowances of all personnel posted at the stations. The accounts branch is responsible for the efficient financial management of all the funds. Today, 19 cadets of the accounts branch would be commissioned. The Combined Graduation Parade takes place twice a year at the Air Force Academy. The President's Commission is awarded to the cadets of various branches on successful completion of their training during this Combined Graduation Parade. The major activities of the Combined Graduation Parade are to present arms to the reviewing officer and inspection of the parade by reviewing officer. This is followed by this commissioning ceremony, felicitation of award winners, oath-taking ceremony and the reviewing officer's address. After presenting the final general salute, the newly commissioned officers would march past the days in a slow march. As they march past the days, they offer their first salute to the reviewing officer. This marks the culmination of the Combined Graduation Parade. देवियों एवं सज्जनों, एयर मार्शल एस श्रीनिवास विशिष्ट सेवा मेडल कमांडेंट वायुसेना अकादमी का आगमन हो रहा है। Ladies and gentlemen, Air Marshal S. Srinivas, Vishisht Seva Medal, Commandant, Air Force Academy, has arrived. He is being received by Deputy Commandant, Air Force Academy.
देवियों एवं सज्जनों, दीक्षांत परेड एक कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान और उसके जीवन का एक यादगार अवसर है। दीक्षांत परेड वायुसेना अकादमी में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संपन्न होने का प्रमाण देती है, जिसके बाद एक कैडेट एक काबिल वायुसेना अफसर के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत परेड में मौजूद कैडेट्स को विंग कमांडर के श्रीनिवासन, सीनियर इंस्ट्रक्टर आउटडोर ट्रेनिंग और वारंट ऑफिसर बीएस यादव, वारंट ऑफिसर इंचार्ज आउटडोर ट्रेनिंग के नेतृत्व में आउटडोर ट्रेनिंग के काबिल दल ने प्रशिक्षित किया है। Ladies and gentlemen, Mrs. Hyacinth May Radish, President AFWA Regional, has arrived. She is being received by Mrs. Sunita Srinivas. आज परेड में नंबर 1 और 3 वायुसेना के बैंड मौजूद हैं, जिसका नेतृत्व जूनियर वारंट ऑफिसर पारसनाथ शर्मा कर रहे हैं। वे एक क्वालिफाइड ड्रम मेजर हैं। वे 2010 से गणतंत्र दिवस परेड में बैंड कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और रशिया में इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल एंड टैटो में भाग लिया है। बैंड आज विशेष रूप से कार्यक्रम के लिए चुनी गई चुनिंदा सैन्य धुनें बजाएगा। शुरुआत में आपको लड़ाकू और एयरफोर्स कलर की धुन सुनाई दी। इसके अलावा आप इवनिंग स्टार, विजय भारत, ट्वाइलाइट, वायु शक्ति, बेनिहाल, एयर बैटल और एस्ट्रोनॉट भी सुन सकेंगे। नवनियुक्त अधिकारी आनंद लोक की धुन पर, जो सैनिकों की एक परिचित धुन है, धीरे चाल में मार्च करेंगे। अंत में सारे जहां से अच्छा की धुन पर बैंड मार्च करेगा। देवियों एवं सज्जनों, एयर मार्शल आर रधीश, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशिक्षण कमान का आगमन हो रहा है। Ladies and gentlemen, Air Marshal R. Radish, Ati Vishishta Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding in Chief Training Command has arrived. He is being received by Commandant Air Force Academy. General Food, Government Just. Judgment, Baju, Just.
आइए अब बताते हैं इस परेड में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में ताकि आप उनके महत्व से अवगत हों। प्रेसिडेंट्स प्लाक, यह पुरस्कार पायलट कोर्स और ग्राउंड ड्यूटी कोर्स में पहले प्रशिक्षु को दिया जाता है। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के दौरान पायलट कोर्स से फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट घोषित किए जाने वाले कैडेट को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सॉर्ड ऑफ ऑनर समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। Ladies and gentlemen, Mrs. Neeta Chaudhary, President AFWA, has arrived. She is being received by Mrs. Hyacinth Radish and Mrs. Sunita Srinivas. Ladies and gentlemen, for over 9 decades, the Indian Air Force has relentlessly operated in peace and war and never let its guard down. We, the Air Warriors, are always prepared to defend our skies each and every time. Right in front is written the vision statement of the Indian Air Force: People first, mission always. The vision statement underscores the importance that Indian Air Force places in its personnel, as it is the man or woman behind the machine who would eventually decide the outcome of any operational endeavor. While induction of the state-of-the-art equipment and systems upgrades the combat potential of Indian Air Force, our people remain our most valuable asset and the biggest strength. As the cadets would be commissioned shortly, having gone through dedicated training and mentoring, it's their firm belief that each one of them has a duty to care and look after the people placed under their charge. देवियों एवं सज्जनों, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एडीसी वायुसेना अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। Ladies and gentlemen, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Param Vishishta Seva Medal, Ati Vishishta Seva Medal, Vayu Sena Medal, ADC, Chief of the Air Staff has arrived. He is being received by the Air Officer Commanding in Chief Training Command and Commandant Air Force Academy.
and gentlemen, you would be aware of the creation of a weapons systems branch for officers in the Indian Air Force, as was announced by the Chief of the Air Staff during the Air Force Day celebrations at Chandigarh last year. This is Indian Air Force's new operational branch since independence, and we are proud to inform you that Air Force Academy would commence training cadets of this branch from January 2024. The officers of the Weapons Systems branch would be commissioned next year in December 2024 and would go on to immensely enhance the war-fighting capability of the Indian Air Force. Ladies and gentlemen, we would now like to apprise you of the sequence of flypast for today's event. As the parade presents arms to the reviewing officer, 3 Pilatus PC-7 Mark II aircraft led by Squadron Leader Jakhad will fly past. Later, 3 Chetak helicopters led by Wing Commander Arunima will give an airborne salute when the Nishan Toli passes by the dais. When the parade presents arms, once again in reviewing order, 3 Pilatus PC-7 aircraft led by Squadron Leader Jakhad would be flying past. As the Nishan Toli is marched out, 3 Hawk aircraft led by Squadron Leader Hoysel will fly past. After their commissioning, as the first rank of officers approaches the dais to salute the reviewing officer, you will see 3 Kiran aircraft fly past in formation, and as the last rank of the officers approaches the dais, 3 Hawk aircraft will fly past in formation. Today's flypast is being coordinated and supervised by Wing Commander Gaurav Raturi, Squadron Leader Tarun Dhote, and Junior Warrant Officer B.V. Brahmaji. Sacred! Savan! Ladies and gentlemen, the reviewing officer for today's parade, Honorable Raksha Mantri of India, Shri Rajnath Singh, has arrived. The Honorable Minister is being received by Chief of the Air Staff, Air Officer Commanding-in-Chief Training Command, and Commandant Air Force Academy. Sacred! 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 Batu Sat.
शाद परेड आपके दर्शन के लिए हाजिर श्रीमान। The Honorable Minister will now inspect the graduation parade. श्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को ग्राम भबौरा, तहसील चकिया, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार में हुआ। इन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा गांव में प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से एमएससी फिजिक्स की डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में भौतिक विज्ञान व्याख्याता के रूप में काम किया। श्री राजनाथ सिंह 1969 से 1971 तक एबीवीपी गोरखपुर संभाग के संगठनात्मक सचिव रहे। वे साल 1972 में मिर्जापुर शहर के आरएसएस महासचिव बने। इन्होंने साल 1974 में राजनीति में प्रवेश किया और साल 1977 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में चुने गए। साल 1988 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए एमएलसी चुने गए। साल 1991 में वे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। साल 1994 में वह राज्यसभा के सदस्य बने। 22 नवंबर 1999 को वह केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री बने। इस अवधि के दौरान इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम शुरू करने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 28 अक्टूबर 2000 को वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2 बार बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से विधायक निर्वाचित हुए। 24 मई 2003 को वह केंद्रीय कृषि मंत्री बने और उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने। इन्होंने देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए भारत सुरक्षा यात्रा भी शुरू की, जिसमें इन्होंने कई राज्यों का दौरा किया। Now, introducing you to the parade commanders. The parade adjutant is Flight Cadet Siddhant Singh Thakur. Squadron commander of number 1 squadron, which is being reviewed now, is Flight Cadet Nairuth Reddy. Squadron commander of number 2 squadron is Flight Cadet Karmanya Farshwal. The Nishan Toli is being led by Flight Cadet Abhinav Gorsi. Squadron commander of number 3 squadron is Flight Cadet Ria Mishra. Squadron commander of number 4 squadron is Flight Cadet Meva Singh Taliwal. श्री राजनाथ सिंह ने 31 दिसंबर 2005 से 19 दिसंबर 2009 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। ये मई 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सांसद चुने गए। 26 मई 2014 को श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली और 30 मई 2019 तक इस पद पर काम किया। 31 मई 2019 से ये भारत के रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय संचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल की। भारतीय सेना की सैन्य पुलिस कोर में महिलाओं को सैनिक रूप में शामिल करने का प्रस्ताव इनके द्वारा लिया गया था और कुल 1700 महिला सैन्य कर्मियों की भर्ती करने का निर्णय भी इनके नेतृत्व में लिया गया था। रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद से एसएससी में महिला अधिकारियों का कार्यकाल 10 साल से बढ़ाकर 14 साल करने और सेना में उनकी पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार जैसे कदम भी उठाए गए हैं। रक्षा मंत्री के रूप में ये भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ावा देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने अगली पीढ़ी के कार्वेट, हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, टैंक इंजन और रडार सहित 108 सैन्य हथियारों और प्रणालियों का निर्माण भारत में करने के लिए कई कदम उठाए,
देवियों एवं सज्जनों, इनका सपना भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखना है जो दुनिया को न केवल आर्थिक क्षेत्रों में बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करे। दीक्षांत परेड को मंच से गुजरने की आज्ञा दे श्रीमान। मंच से गुजरेगी नंबर 1 स्क्वाड के आगे। Now you can see the parade commander marching towards the left to take his position beside the parade adjutant. दाहिने दिशा दिल की बोल, दाहिने बंद। जैसे ये कैडेट्स अपनी टोलियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे एक विचार आता है, हर शिखर अकेले हासिल नहीं होता, साथ मिलकर चलने का साहस कोई गैर नहीं रखता। एक फौजी की पहचान सिर्फ उसके नाम से नहीं होती देवियों और सज्जनों, कभी पूछ कर देखो तो अपनी टुकड़ी से ही वे अपना नाम और अपने कर्मों से अपनी टुकड़ी की पहचान बतलाते हैं। देवियों और सज्जनों, परेड में शामिल कैडेट अब आपके सामने मार्च करते हुए अपने कौशल, तालमेल और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे। Ladies and gentlemen, when the Nishan Toli passes in front of you, all are requested to rise and those in uniform to salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरती है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वर्दी में हैं वे सलामी दें। देवियों और सज्जनों, मंच के आगे गुजरने से पहले परेड निकट लाइन से खुली लाइन में बदल जाएगी और धीमी मार्च करते हुए माननीय रक्षा मंत्री का अभिवंदन करेगी।
order and continue with quick march to reposition in front of the dais. The band is now marching in front of you, playing the tune Vayu Shakti, composed by Air Veteran Wing Commander P.K. Jena, Vishisht Seva Medal. Ladies and gentlemen, the confidence and pride in the marching contingents is an unsaid word exhibiting the thought, together we march to a new life, each step ahead of the other. Not looking back, but still remembering our roots, looking ahead to inculcate in others what we have learned in here. As the parade contingent marches by, arms swinging in synchronization, heels digging in, we are proud of the burning desire that the training at the Air Force Academy has kindled in these young cadets. During their training at the Air Force Academy, the trainees being commissioned today have imbibed knowledge, leadership skills, and value systems. Most importantly, they have been trained to lead with professionalism and dedication. This is in accordance with the mission of the Air Force Academy to train air warriors of highest professional, intellectual, physical and moral caliber for a lifetime of service to the Indian Air Force and the nation. Today, these young entrants who have joined from the National Defense Academy and universities all over the country would be commissioned as worthy Indian Air Force officers who would go on to achieve the Indian Air Force motto of touch the sky with glory. After the parade halts, it would present general salute to the Honorable Raksha Mantri in a reviewing order.
समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। मैच से देश चल। दीक्षित परेड जनरल सैल्यूट सलाम में सत दीक्षांत परेड आयोगदान पुरस्कार वितरण और शपथ ग्रहण के लिए तैयार है श्रीमान। देवियों एवं सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कैडेट्स आगे बढ़ते हुए पदवी अनुदान के लिए 4 अनुभागों में मंच के सामने खड़े होंगे। वहीं आपकी दाहिनी ओर से जूनियर कैडेट्स एयर क्रू बैचेस लिए और कमीशन होने वाले कैडेट्स के कैप से सफेद बैंड और कंधे से सफेद फ्लैशेस हटाने के लिए अपना स्थान ले रहे हैं। आज कैडेट्स के 4 अनुभागों को माननीय रक्षा मंत्री, वायुसेना अध्यक्ष, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशिक्षण कमान और कमांडेंट वायुसेना अकादमी द्वारा पदवी अनुदान की जाएगी। The trainees being commissioned today are Flying Officer Atul Prakash, Flying Officer Pranav BS, Flying Officer Pranati S. Bargi, Flying Officer Nairut Reddy, Flying Officer Mannat Sarao, Flying Officer Ashutosh Dash, Flying Officer Abhishek Tiwari, Flying Officer Mayank Lamba, Flying Officer Nikhil, Flying Officer Parakram Singh Sankla, Flying Officer Yuvraj Singh Waghela, Flying Officer Charush Khurana, Flying Officer Tarun Pandit, Flying Officer Garv Saini, Flying Officer A. Vijay Mudalyar, Flying Officer Vishwan Bharadwaj, Flying Officer Vineet V, Flying Officer Ankit Kumar, Flying Officer Navneet Yadav, Flying Officer Varun Singh, Flying Officer Ashdeep Singh, Flying Officer Navyug Gangwar, Flying Officer Avni Gupta, Flying Officer Rohit, Flying Officer Mohit A, Flying Officer Sonali Santosh, Flying Officer Raghunandan Singh, Flying Officer Yashasvi Joshi, Flying Officer Navroop Singh, Flying Officer Neeraj Baseda, Flying Officer Pranav Belur, Flying Officer Abhishek Singh, Flying Officer Kavish Gupta, Flying Officer Sai Sawant, Flying Officer Arjun Mahajan, Flying Officer Shubham Kumar, Flying Officer Gagan Sharma, Flying Officer Prakhar Mishra. अगली राइट बारकोमेट Flying Officer Meva Singh Taliwal, Flying Officer Harita Bharat, Flying Officer Prachi Sharma, Flying Officer Daksh, Flying Officer Ibn John,
Flying Officer Parth Kanungo. Flying Officer Venkat Saimadji. Flying Officer Surya Kiran. Flying Officer J. Kumar. Flying Officer Aditya Pandeep. Flying Officer Deep Jyoti Roy. Flying Officer Aniti Ganji. Flying Officer Rahul. Flying Officer Ritik Mahajan. Flying Officer Hit. Flying Officer Sahil Patil. Chobe. Flying Officer Ajay Kumar Chawal. Flying Officer Sandeep Singh. Flying Officer Dhananjay Singh. Flying Officer Nitesh Kumar. Officer Deepak Datta. Flying को वह केंद्रीय कृषि मंत्री बने और उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बने। इन्होंने देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए भारत सुरक्षा यात्रा भी शुरू की, जिसमें इन्होंने कई राज्यों का दौरा किया। Now, introducing you to the parade commanders. The parade adjutant is Flight Cadet Siddhant Singh Thakur. Squadron commander of number 1 squadron, which is being reviewed now, is Flight Cadet Nairuth Reddy. Squadron commander of number 2 squadron is Flight Cadet Karmanya Farshwal. The Nishan Toli is being led by Flight Cadet Abhinav Gorsi. Squadron commander of number 3 squadron is Flight Cadet Riya Mishra. Squadron commander of number 4 squadron, Officer Adman Singh Lamba. Flying Officer Himanshu Singh. Flying Officer Avik Dhama. Flying Officer Kishore Kumar M. Flying Officer Aditya Gupta. Flying Officer Bhanu Prakash. Flying Officer Ayush Kumar. Flying Officer Sachin Kumar Soni. Flying Officer Sohan Goswami. Flying Officer Ajay Vikram Singh Bisht. Flying Officer Mansi Ghansala. Flying Officer Gurpreet Singh. Flying Officer Pradyumn Patel. Flying Officer Sachin Yadav. Flying Officer Siddharth Mohan. Officer K. Amit. Officer Harshit Kumar Tiwari. Flying Officer Dishant Solat. Flying Officer Lata Kaur. Flying Officer Sumit Gi. Flying Officer Riya Mishra. Flying Officer Khushi Sachdev. Flying Officer Karmanya Farshwal. Flying Officer Sonika Jatrana. Flying Officer Suraj Uday Madangiri. Flying Officer M. Chandrasekhar. Flying Officer Ajay Kataria. Flying Officer Anirudh RL. Flying Officer Deepu Singh. Flying Officer Ryan Hendricks. Flying Officer Asif Hussain. Flying Officer Karanjot Singh. Flying Officer Manivandan G. Flying Officer Prasanna Kumar Manna. Flying Officer Harsh Malwal. Flying Officer Pat Jakmola. Flying Officer C. Karthik Reddy. Flying Officer Gokul Kumar Patil. Flying Officer Tanmay Patil. Flying Officer Ashutosh Pandey. Flying Officer Yashima Ahlawat. Flying Officer Devesh Budhori. Flying Officer Sudhanshu Gupta. Flying Officer Abhishek Kumar. Flying Officer Shailesh Bisht. Flying Officer Rohan Paul. Flying Officer Neeraj Tiwari. Flying Officer Abhishek Kumar Singh. Flying Officer Amar Upadhyay. Flying Officer Divyanshu Jangir. Flying Officer Pradyumn Asthana. Flying Officer Rohan Pehe. Flying Officer Kajal Agarwal. Flying Officer Chandan. Madhyarai! Barka Mad! Flying Officer Amartya Dhami. Flying Officer Siddharth Karel. Flying Officer Sriraj V. Flying Officer Nitin Singh Bisht. Flying Officer Bhanu Sharma. Flying Officer Aman Verma. Flying Officer Krishan Nandan Mondal. Flying Officer Ajit Kumar SS. Flying Officer Ashish Verma. Flying Officer Hardik Bhatt. Flying Officer Himanshu. Flying Officer Sravan. Flying Officer Vipin Kumar Malik. Flying Officer Paritosh Sharma. Flying Officer Hitesh Sontake.
Officer Harmeet Thukran, Flying Officer Rishabh Dubey, Flying Officer Abhijit, Flying Officer Himanshu Sharma, Flying Officer Sitanshu Kochar, Flying Officer Karan Sobti, Flying Officer Rohit Yadav, Flying Officer Sitanshu Mishra, Flying Officer Shubham Sharma, Flying Officer Himanshu Bhavsar, Flying Officer Kanishk Mishra, Flying Officer Santosh Kumar, Flying Officer Rahul Dangi, Flying Officer APS Bhadoria, Flying Officer Sarthak Trigun, Flying Officer Nitin Sangwan, Flying Officer Arjun Singh Jaswal, Flying Officer Aditya Mohanty, Flying Officer Tanya Singh, Flying Officer Basavraj G. Now, the Honorable Raksha Mantri and Chief of the Air Staff would award wings to 8 officers of the Indian Navy, 9 officers of the Indian Coast Guard, and 2 foreign trainees from Vietnam. Lieutenant Shubham Agarwal, Assistant Commandant Bhushan Pawar, Lieutenant Akash Kumar Mehta, Assistant Commandant Anish Kumar Daksh, Lieutenant Gaurav Pratap Singh, Assistant Commandant Abhishek Sangwan, Lieutenant Galio MacLean Lima, Assistant Commandant Siddhant Dhondial, Sub-Lieutenant Surender R, Deputy Commandant Sumit Kumar, Sub-Lieutenant Pugalmati M, Assistant Commandant Surikant Butola, Sub-Lieutenant Tushar Malik, Assistant Commandant Vishal Chauhan, Lieutenant Aditya, Assistant Commandant Arjun Kalia, Flight Cadet Wu Kha, The Sword of Honor goes to Flying Officer Atul Prakash. President's plaque, first in order of merit, Ground Duty Officer's Course goes to Flying Officer Amrinder Jeet Singh of Accounts Branch. The Commandant, Air Force Academy, will now administer the oath to the newly commissioned officers. आप सब मेरे मैं बोलने के पश्चात
आप सब मेरे मैं बोलने के पश्चात अपना रैंक और नाम बोलें और मेरे साथ दोहराएं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी रखूंगा और मैं भारतीय संघ की भारतीय वायुसेना में सेवा के प्रति वचनबद्ध रूप में ईमानदारी और विश्वसनीयता के साथ सेवा करूंगा और जहां भी आदेश किया जाए हवाई, भूमि या समुद्री मार्ग से जाऊंगा और अपनी जान की आखिरी सांस तक भारत के राष्ट्रपति और मेरे ऊपर रखे गए किसी भी अफसर के सभी आदेशों को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। आपके हिफाजत के लिए तैयार है श्रीमान। Ladies and gentlemen, the Honorable Raksha Mantri will now address the parade. Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, Air Marshal R. Radhis, AOC in C, Training Command, Air Marshal S. Srinivas, Commandant Air Force Academy, वायु सेना अकेडमी के सभी प्रतिभाशाली कैडेट्स और उनके गौरवान्वित माता पिता, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज भारतीय वायुसेना एकेडमी में 212वें कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा करना सचमुच हमारे लिए यह गौरव का क्षण है। सबसे पहले मैं इस शानदार परेड में शामिल सभी ट्रेनीज को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। आज की यह परेड दिखाती है कि इसके पीछे आपने कितनी कड़ी मेहनत की है और कितना आपने अभ्यास किया है। इसके साथ ही मैं आज के पुरस्कार विजेताओं को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन आप सभी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। आज से आप अपने जीवन की एक नई यात्रा पर निकलेंगे। यहां से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है। यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है ही, साथ ही साथ यह आपके माता पिता, मित्रों और आपके प्रशिक्षकों के लिए भी एक बेहद गौरव का क्षण है। इसलिए मैं समझता हूं इस अवसर पर आपके साथ साथ ये सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच इसलिए आया हूं ताकि मैं रक्षा मंत्रालय के इस उत्कृष्ट परिवार में शामिल होने पर आपको हार्दिक बधाई दे सकूं और आपसे दो बातें भी कर सकूं। मैं भले ही एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आप सबके बीच आया हूं, लेकिन चूंकि मैं उम्र में आप सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं कुछ देर तक आप सभी साथियों से एक अभिभावक के रूप में कुछ बातें करना चाहूंगा। साथियों, आज से आप सब कैडेट से ऑफिसर बन रहे हैं। एक कैडेट और एक ऑफिसर के जीवन में बड़ा अंतर होता है। जब आप कैडेट थे तब आपके जो इंस्ट्रक्टर थे या फिर जो प्रशिक्षक थे, वे पहले आपको ट्रेनिंग देते थे, पहले आपको लेसन पढ़ाते थे, फिर उस बेस पर आपका इवैल्यूएशन होता था या आपका एग्जाम होता था। लेकिन अब जब आप ऑफिसर बनकर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग होगी। वहां एग्जाम पहले होगा और उस एग्जाम के बाद आपकी गलतियों से
आपको लेसन मिलेगा। उस रियल लाइफ में आप सबक बाद में सीखेंगे, आप परीक्षा पहले देंगे। इसलिए मुझे लगता है साथियों कि वह जो आपकी केयर फ्री लाइफ थी वह अब यहां से समाप्त हो रही है, क्योंकि अब तक इंस्ट्रक्टर थे जो आपको गाइड करते थे। उस इंस्ट्रक्टर के साथ या उस टीचर के साथ आपका आत्मीय रिश्ता था, लेकिन अब आगे से आपके जीवन का इंस्ट्रक्टर भी बदलने वाला है। जब आपके सीनियर ऑफिसर या फिर आपके ट्रेनर आपके इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे, बल्कि अब जिंदगी और खुला आसमान आपके इंस्ट्रक्टर होंगे। अब तक आप अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से और अपने समाज से कुछ सीखते थे, लेकिन अब यहां से आपको आपकी जिंदगी ही आपको सिखाएगी। साथियों, मैं जब से यहां आया हूं तब से मैं आपके अंदर की ऊर्जा और जोश को देख पा रहा हूं, और ऐसा होता भी है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो कैडेट्स होते हैं बड़े इनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर नए विचारों के प्रति एक खुलापन होता है, उनके अंदर आइडियलिज्म होता है। लेकिन साथ ही मैंने अपने 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव में यह बात भी देखी है कि चाहे वह आर्म फोर्सेस हो, राजनीति हो, कला हो या फिर कोई और सार्वजनिक क्षेत्र हो, जैसे जैसे आप वास्तविकता के धरातल पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ लोगों के अंदर का आइडियलिज्म यह धुंधला पड़ने लगता है। आज आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। आप नई एनर्जी से भरे हुए हैं। आपका पार्टी करने का भी निश्चित रूप से मन होगा। आपका लोगों से बात करने की भी इच्छा होगी। आपके लिए आज का दिन ये बेहद खुशी का क्षण है। इसलिए हो सकता है कि मेरी कई बातों को आप इतने ध्यान से न सुन पाएं। हालांकि आपकी इस खुशी के क्षण में मैं खुद भी इस भाषण को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन एक बात अवश्य मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आप मेरे पूरे भाषण को भूल भी जाएं, पर सिर्फ एक बात याद रखें तो भी मैं अपना यहां पर आना सफल मानूंगा। आपके अंदर नई सोच और नए विचारों के प्रति जो खुलापन है तथा जो आपका आइडियलिज्म है, उसे किसी भी हालत में आप खोइएगा मत। यह मेरा आप सबको सुझाव है। साथियों, रोज सुबह जब आप अपने ऑफिस में जाएं या फिर अपने प्लेन को उड़ाएं, तो एक पल के लिए ही सही आप आज की इस पासिंग आउट परेड को आप जरूर याद रखिएगा। यह मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप हमारी बातचीत का यह अंश जरूर याद रखिएगा कि हमें आपने अपने आइडियलिज्म को किसी भी सूरत में खोना नहीं है। आज आप इतने इनर्जेटिक हैं, रोमांचित हैं, खुश हैं। न्यू थिंकिंग एवं आइडियलिज्म से पूरी तरह से आप लबरेज हैं। इस खुशी और एनर्जी, इस आइडियलिज्म को आप 1 मिनट के लिए भी अपने रोज के काम से पहले याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना आइडियलिज्म कभी नहीं खोएंगे, और आपके अंदर कैडेट की जो ऊर्जा है, जो नयापन है, जो आइडियलिज्म है, वो हमेशा स्वाभाविक रूप से यह बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह बात जरूर याद रखेंगे। साथियों, आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह टाइम टेस्टेड होती है। एक लंबे समय तक इसने यूजफुल पर्पज को सर्व किया होता है। इसलिए ट्रेडिशन को उचित महत्व देना यह भी अति आवश्यक है। लेकिन एक विशेष बात की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है कि लंबे समय तक अगर हम बिना सोचे समझे केवल ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रह गए तो हमारी व्यवस्था में जड़ता यानी ऑसिफिकेशन की स्थिति स्वाभाविक रूप से आ जाती है। उस जड़ता की स्थिति से बचने के लिए तथा समय के हिसाब से तालमेल बनाने के लिए इनोवेशन का लाना यह भी बेहद आवश्यक है। इनोवेशन
बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमें तैयार करता है। और चूंकि दुनिया में हर चीज लगातार परिवर्तनशील है, इसलिए हमें इनोवेशन पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रेडिशन और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बेहद जरूरी है। यदि हम केवल ट्रेडिशन को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी हालत उस डेड लेक की तरह हो जाएगी जिसके पानी से बदबू आने लगती है। हमें एक नदी की तरह प्रवाहमान रहना है, और यदि हम नदी की तरह प्रवाहमान बने रहना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिशन के साथ साथ इनोवेशन को भी लाना होगा। साथियों, आपने देखा होगा कि भाषा में मेटाफर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सबने हिंदी में कहावत सुनी होगी, हवा में उड़ना। सामान्य तौर पर हवा में उड़ने को बेहद नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। इस मुहावरे का प्रयोग भी आपने कई जगह पर सुना होगा कि फला व्यक्ति बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसका मतलब होता है कि उसका जमीन से यानी रियलिटी से कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। आप लोगों के मामले में ऐसी स्थिति मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं है। आप जमीन से ही उड़ के हवा में जाते हैं और हवा से वापस आप जमीन पर ही आते हैं। तो एक तरह से आप हवा में उड़ते हुए भी जमीन से जुड़े रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हवा में भी उड़ते रहिए और जमीन से भी रिश्ता अपना बनाकर रखिए, यानी कि आप इनोवेशन भी लाइए और ट्रेडिशन को भी फॉलो करते रहिए। मुझे विश्वास है कि मेरे इन बातों पर आप सभी निश्चित रूप से विचार करेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको आपके जीवन की आगे की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप अपने माता पिता, परिवार और राष्ट्र का मस्तक सदैव ऊंचा करेंगे। इतना कहकर यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको अंत में पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दीक्षांत परेड उठाओ शस्त्र। Ladies and gentlemen, the band will now play the national anthem. You all are requested to stand and sing along. दीक्षांत परेड को ले जाने की आज्ञा दे श्रीमान। दीक्षांत को ले जाओ। Ladies and gentlemen, as the Nishan Toli exits from the parade ground, 3 Hawk aircraft formation will fly past from your left
to right, paying tribute to the Nishan. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरती है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वर्दी में हैं वे सलामी दें। The band is now playing Vijay Bharat, composed and arranged by late Master Warrant Officer J.A. George, Vishisht Seva Medal. Ladies and gentlemen, as the newly commissioned officers are marching out, up ahead you can see the cadets of the junior course marching in. They will form up in two flanks through which their senior course, which has just been commissioned, will pass. The newly commissioned officers are taking their positions at the rear, waiting to step into their new world. Each step signifies their transformation into bold and responsible officers of the Indian Air Force, ready to serve the nation.
As the newly commissioned officers pass through the formation of the junior course in slow march, they receive their first salute from their juniors. Their hearts are filled with immense pride and satisfaction for having passed the cherished values and traditions down to their juniors. With every step, they recollect their memorable stay at Air Force Academy and people associated with them in their year-long training. These are the people who have helped them to make it to this day, an indelible moment for them and their families. Ladies and gentlemen, you can now see the officers marching towards the dais. As they march past the saluting dais, they would extend their first salute as officers to the reviewing officer who has commissioned them. Ladies and gentlemen, as the newly commissioned officers approach the dais, may I direct your attention to the 3 Kiran aircraft formation led by Group Captain Yasir Farooqi approaching from straight ahead. इस समय प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ना हाथ एक शस्त्र हो, ना हाथ एक अस्त्र हो, ना अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं, डरो नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वहीं सुधा का घूंट हो, जिए चलो, मरे चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं, गड़ो वहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं, मरो नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये पंक्तियां यह संदेश देती हैं कि इन नवनियुक्त अधिकारियों के लिए आज की ये शहर इन नई पंछियों के लिए एक नई उड़ान लेकर आई है। ये वीर सपूत अपने भाग्य की ओर चल पड़े हैं और कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। Ladies and gentlemen, may I now direct your attention to the 3 Hawk aircraft formation led by Scorn leader Hoysel approaching from straight ahead. On this combined graduation parade of 212 course, it is indeed worth saying, each step landing us closer to our dream. Today passing through these portals is the young blood of the world's best aviators. Over an year spent in the academy, and they are
ready for the next transformation. देवियों एवं सज्जनों, आज ये नवनियुक्त अधिकारी एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं. इनके इस जुनून को देखकर ये पंक्तियां याद आती हैं. हर शिखर को पार करने का प्रण लिए, हर चुनौती का डट कर सामना करने का जोश लिए, चल पड़े हैं वीर सपूत एक नई राह पर, चल पड़े हैं लगाकर पंख एक नए आसमान की तलाश पर. After the parade, you will be treated by a captivating low-level aerobatic display by Pilatus PC-7 Mark II aircraft. This will be followed by formation displays by the graceful Sarang helicopter display team in advanced light helicopters, and ladies and gentlemen, by the enthralling Surya Kiran aerobatic team in the Hawk aircraft. Lastly, you will witness a breathtaking and thunderous display by Su-30 MKI.